Okay. Okay, Pranav. So now we have to begin with a new lesson. Okay, that is introduction to microbiology, as we have discussed last time. Okay, तुम लोग का papers मुझे मिल चुका है, which I'll be correcting and sending as early as possible. अभी college का थोड़ा सा hectic चल रहा है because of the additional papers which are going on, right? So this week I'm doubtful whether I'll be able to take one more class, but next week लेता हूँ फिर. ठीक है, तो when there are too many things at a stretch, it is too difficult. Okay. Okay, no problem. So portion चलता रहेगा अपना. Introduction to microbiology. Has any school started with this lesson? Introduction to microbiology. नहीं? Come on screen, everyone. Diksha, Mrunal, Prachi, Gargi. Yes. Okay. So school में किसी का भी start नहीं हुआ है ना ये introduction to microbiology? नहीं. But in 9th standard, I think. Oh, Pranav, your school has finished the whole book. Wonderful. That's why you are in the native place now. So complete. Okay. 9th standard में you had already a lesson, useful and harmful microbes. Those who were there in AS last year, you know, somebody has taught you that. है ना? अच्छे से याद है वो lesson? Useful and harmful microbes. Yes. Okay. Anandita, you had it last year. सर Useful आता and है. आता है अच्छे से. हाँ. Okay. Come on the screen, Anandita, Gargi, Prachi, everyone. So here in 10th standard also, अभी you know very well कि there are a lot of loopholes that you have in your textbook, है ना, and that we have seen in the very first lesson that we did, heredity. So we can't help it. अभी introduction to microbiology भी ऐसा है कि the lesson is not framed very nicely, okay, but whatever is given, the information is good. ओके सिर्फ टॉपिक के साथ बहुत ज्यादा कुछ ऐसा मैच नहीं हो रहा है. ठीक ठाक है. एटलीस्ट दिस लेसन इज फाइन, बट मेजर वन इज विद सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. ओके, so now what is the thing is, since the last few weeks, like it's been too hectic for me. So introduction to microbiology का like अभी तक मैंने कुछ पीपीटी टाइप बना नहीं पाया हूँ. I have started with just a little bit. So today I will share the textbook का screen itself and I will explain. Okay, next turn में देखता हूँ कुछ बना सकता हूँ तो I will put that. ठीक है. All of you are having your textbooks also with you, right? Okay, so basically, can you tell what is microbiology? Microbiology क्या होते हैं? Study about microbes. Okay, and what are microbes? Organisms which cannot be seen by naked eye. Okay, they They are, need a microscope to be seen. yes, so they are unicellular organisms which can be seen only under the microscope. Okay, so when you are talking about microorganisms, also called as microbes, okay, as you said, you cannot see it with a naked eye, but they are present around. Are there microorganisms around us? Do we have microorganisms around us? Yes. Right? Can you give an example? Example of any microorganism that you have around you? So fungus. Okay, Gargi is telling Bacteria. fungus, bacteria. Okay. Gargi, can you tell any fungus which is present Viruses. around? हाँ, आजकल तो वायरस ही चल रहा है. This 2020 is the year of virus. So that is also microbiology, yes. है ना? So Gargi, कोई example दे fungus का which is there around us? Yes. You are the microorganism of this batch. ज्यादा नजर नहीं आती. बोल. Others also. I cannot see Mrunal, Prachi, Anandita. बोलो.
any fungus which you feel is economically useful for us in any way? Yeast. Yeast is useful, yes. Yeast कहाँ use करते हैं? फर्मेंटेशन Bread. के लिए Bread, ब्रेड्स वो सब breads and confectionaries, right? Very good. Okay. Bacteria you said. Which bacteria is useful for us? Example दो. लैक्टोबैसिलस Lactobacillus. Lactobacillus for dairy industry. Very good. Any virus which is useful for us? Don't say COVID. सर वो कुछ स्किन के लिए बहुत यूजफुल रहता है, पता नहीं, बी से ही स्टार्ट होता है उसका नेम, कौन सा? आपने एक बार बताया था, बी ओके. से ही स्टार्ट होता है. Yes, yes. Clostridium करके मैंने बताया था, which is useful in some way. हाँ. Okay. Good. आज अचानक से क्या हो गया गार्गी को? सब कुछ याद आ रहा है? Yes, very good, very good. Keep answering like this. ऐसे अच्छा लगता है ना, interaction रहता है तो. Okay. Okay. Any virus which you feel which is useful for us? Neha? Yes, Aditya, you were also there last year. इतने दिनों बाद दिख रहा है आज? सर नहीं, पहले से नहीं, मतलब अभी कितने दिनों से बाद दिख रहा है? दिवाली के बाद तो आज ही देख रहा हूँ. यस सर, यस सर. Yes, Neha, any virus which is सर बोलो. एक काउपॉक्स वायरस रहता है, हाँ. वो भी यूजफुल रहता है. लाइक मैंने स्टोरी सुनी थी कि लास्ट मीन्स जब किंग्स का रूल था तभी एक किंग को एक कोई तो डिसीज हो गया था. फिर उसका स्प्रेड इतना होने लगा कि उसके जो कोर्टियर्स थे उनको भी हो गया. लेकिन वहाँ जो मिल्कमेड्स आती थी किंगडम में दूध देने, उनको कुछ नहीं होता था. फिर एक बार वहाँ का जो डॉक्टर्स थे उन लोगों ने रिसर्च किया तो उनको ऐसा लगा कि जो काउस में एक वायरस होता है जो इनके टच में रहता है मिल्कमेड्स के, इसलिए उनको कुछ नहीं होता. तो वो डॉक्टर ने खुद को वो इंजेक्ट कर लिया और फिर वो ठीक हो गया. What you are telling is very correct. You have told the story of the person who has discovered a vaccine. Okay, your doctor नहीं, he was a scientist. Okay, Dr. Edward Jenner. Cowpox जो बीमारी था जो किंग्स में फैल गया था, उनके कोर्टियर्स के पास फैल गया था, because of which they were trying to search for a cure या vaccine. Okay, and जो ये पॉइंट है कि जो मिल्कमेड्स थे दे डिड नॉट सफर फ्रॉम द डिसीज इवन इफ एवरीबडी एल्स वाज सफरिंग. द रीजन वाज समथिंग कॉल्ड इम्यूनिटी, कि दे वर ऑलवेज इन कांटेक्ट विद द काउज एंड द कैटल. तो उसके वजह से उनके शरीर में एंटीबॉडीज तैयार होते गए. ओके, दे ऑलवेज केप्ट ऑन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, इसलिए उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ. अभी अपना जो कोविड-19 चल रहा है उसके केस में भी यही बोला जा रहा है कि देयर विल बी समथिंग कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी, कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर सबके सब इन्फेक्ट हो गए तो वायरस अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिकॉज उसको कोई नया होस्ट मिलेगा ही नहीं. एवरीबडी विल बी इन्फेक्टेड. ओके, तो वो इम्यूनिटी की वजह से हुआ था. एंड एडवर्ड जेनर, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ही वांटेड टू फाइंड आउट अ वैक्सीन अगेंस्ट काउपॉक्स. बट उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके जो वैक्सीन निकला दैट वाज एक्चुअली अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन उसने निकाला. ओके, सो दैट वे यू कैन से कि अगर जैसे मेरा क्वेश्चन था कि वायरसेस कहाँ यूजफुल है हमारे लिए, तो इन अ सेंस यूजफुल ये बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ वायरसेस वी कैन एक्चुअली फाइंड द एंटीबॉडीज और द वैक्सीन बाय विच वी कैन कीप आवरसेल्व्स इम्यून टू इट. सर एक बार टीचर ने पूछा था कि ये ना वायरस रहता है ना, वो हम लोग को बहुत फ्रेंडली रहता है, बैक्टीरिया को मार सकता है वो, ऐसा कुछ तो सर टीचर ने एक बार बताया था हम लोग को. सी वायरस अगर फ्रेंडली रहते तो आज हम इतने महीने से घर पे नहीं बैठे होते ना. मतलब जो कुछ कुछ वायरस है वो. See, you cannot generalize this fact कि viruses के तीन टाइप होते हैं.
animal virus, plant virus, and bacterial virus. Okay, and viruses are host specific, मतलब हर वायरस का अपना फिक्स्ड होस्ट होता है. अभी हमें जो कॉमन कोल्ड होते हैं, सिंपल सा बीमारी है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ वायरस, बट वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स में हो सकते हैं. दैट वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट एनी प्लांट. तो रास्ते से जा रहे किसी प्लांट ने छींक दिया, ऐसा नहीं होता है ना. ओके, बिकॉज वो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकते. दैट इज ओनली फॉर ह्यूमन बींग. सिमिलरली प्लांट्स में वायरस का डिसीजेस होते हैं, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस, तो वो सिर्फ प्लांट्स में होता है, वो ह्यूमन बींग्स को नहीं हो सकते. दूसरे एनिमल्स में भी ऐसे वायरस के डिसीजेस है, तो दे आर होस्ट स्पेसिफिक. तो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन दे सकते हैं. दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज. तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन वायरसेस, बट वो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, वो प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स को नहीं अफेक्ट करेंगे. तो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वायरस, सबका अपना अपना स्पेसिफिसिटी होता है. तो ओवरऑल हम ये नहीं बोल सकते कि वायरसेस आर फ्रेंडली टू अस. अगर हम फ्रेंडली होते वायरस के साथ तो 2020 का साल ऐसे नहीं जाता है कि नहीं. दैट इज द सिंपलेस्ट फैक्ट, राइट. ओके, एंड जहाँ तक बैक्टीरिया का सवाल है या एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफ यू टेक, you cannot say for sure or generalize this कि all fungi are bad, all fungi are good, या all bacteria are bad, या all bacteria are good. कुछ अच्छा है, कुछ बुरे. बुरे इन द सेंस लाइक, सी उनको बुरा बोलना में एक्चुअली गलत ही होगा. कोरोना वायरस कोविड-19 को भी बुरा न बोलना गलत होगा, बिकॉज द वायरस डजंट नो कि व्हाट प्रॉब्लम इट हैज कॉज्ड टू ह्यूमन बीइंग्स. व्हाटएवर इट इज डूइंग इज इट्स ओन लाइफ पाथ. वो अपना जिंदगी जी रहा है, बट उसके वजह से हमें तकलीफ हो रहा है. गेटिंग इट? Okay, ultimately microorganisms are also living beings. They are unicellular creatures. तो उनका अपना लाइफ प्रोसेस चल रहा है, राइट. लैक्टोबैसिलस, वो जब वो दूध का दही बना के दे रहे हैं तो उसको थोड़ी ना पता कि मैं दही जमा रहा हूँ. इट इज डूइंग इट्स ओन पाथवे. उसका एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है. बट वी नो दैट इट इज प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड विच इज यूजफुल फॉर अस एंड वी मेक यूज ऑफ इट. So that is why when you are studying about microorganisms, you cannot generalize this fact that they are good or they are bad. There are many microorganisms without which we cannot survive. For example, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है E. coli, Escherichia coli. This bacteria is found inside our intestines. And वो काफी जनरेशन से evolution में हमारे intestine के साथ जुड़ गया. इस वजह से हमारे intestine में there are certain food nutrients which are digested only by that bacteria. We human beings cannot produce the enzymes necessary for it. That is also possible. तो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ ओवरऑल एक अच्छा ही संबंध है, हम पूरी तरह से उसको दूर नहीं रख सकते. एंड जहां तक इंसानों में बीमारी होता है, when we fall ill because of microorganisms, obviously nobody will like falling ill. तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई देते हैं, कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं. बट क्या हो जाता है कि when you fall ill because of any microorganism, it also makes you stronger. Next time it becomes less chance that you will fall ill because of the same pathogen. That is our immunity. That is because we are producing the antibodies. अभी कोविड-19 के केस में भी तुम लोग ने अपडेट सुना होगा कि those people who have already suffered from COVID-19 and recovered from that, hardly a very few percentage of the population have got COVID-19 again. बाकी majority, more than 99% of the people, they have not got COVID-19 again in life. अभी तक तो वही सीन है. Okay, so when it comes to microorganisms, things are totally uncertain. ठीक है. So here in this lesson now, you have introduction to microbiology. Okay, topic दिया है introduction to microbiology and content जो है पूरा applications है. Okay, 9th standard में जो पढ़े थे ना lesson, उसका नाम देना चाहिए था introduction to microbiology, because you were just introduced to different groups of microorganisms, and this should have been applied microbiology. Applied microbiology का मतलब है after knowing about all the different types of microorganisms, which are the different ways in which we can use them, in which human beings can make use of them for our benefit. Getting it? Most of it you have already studied as examples. तो यहाँ पर भी वैसे ही है. In this lesson also, you will be learning all possible examples where we can use microorganisms. कि सबसे पहले ये देखना है कि what is applied microbiology. Then you will learn about industrial microbiology.
and the different types of products that you can obtain from microbes. Okay, so it is not a very big lesson, but all the points which are given is like very interesting and काफी updated information है, with lot of examples. To learn all these examples, okay, as much as possible, and it will be easy to remember. सिर्फ microbes के नाम वगैरह आएंगे थोड़े टेढ़े मेढ़े, but वो learn करना है, you can't help it. ठीक है, अभी तक तो वो आदत ही पड़ गया होगा बायोलॉजी का, right? Come on the screen everyone. ऐसे दीवार को देख के पढ़ाने में मजा नहीं आता. Yes, ऐसा लगना चाहिए, क्लासरूम वाला फीलिंग होना चाहिए, राइट? इमेजिन करो तुम लोग भी क्लासरूम में बैठे हो, मैं क्लासरूम में मिस्टर इंडिया बन के आके पढ़ाऊंगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना? यस, तो तुम लोग के एक्सप्रेशन से पता चलता है वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट, वेदर यू आर देयर और नॉट. रिमेन ऑन द स्क्रीन, जाओ मत कहीं पे. बिकॉज आई रिमेंबर कॉलेज का भी ऐसे लेक्चर ले रहा था, लाइक कॉलेज में वी डोंट इंसिस्ट बिकॉज अलग इश्यूज है, कॉलेज का रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं. So literally there was somebody who got unmuted in between and I was hearing sounds of yawning and snoring college ke lecture mein. So that's the reason I prefer keeping students in front of me. Okay, so Diksha, Anandita, Gargi. Yes. Okay, so when you're talking about industrial microbiology, okay, first thing, applied microbiology ka matlab in science, at least in biology, when you're studying about all the different types of life forms, okay, right from unicellular microorganisms to the most complex higher organisms, जब इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, you cannot just restrict yourself to only those organisms. अभी जैसे हम plants के बारे में पढ़ते हैं in botany, so if you study about plants and you don't correlate or use that knowledge for other purposes, there is no point in studying that. Okay, तो मैंने मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि टर्मरिक है, एलोवेरा है, ओके, जिंजर है, बट इफ आई study about them and I don't use it for treating human diseases, is there a point in studying about that? No. So that is why one has to study and one has to use that knowledge even in other fields. Okay, so that is applied microbiology. Applied का मतलब है with the help of the knowledge of microorganisms that you get, how do you apply that knowledge in other fields? तो हम लोग सोसाइटी के लिए, मैनकाइंड के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं. Okay, different types of food material, different types of medicines which you can get only from microorganisms. Understood? Mrunal, can you give an example of any medicine that you can get from microorganism? Any example? Think about it. Yes, Mrunal? सर टिटानी करके जो रहता है उसका भी आता है ना? घर की आज क्या खाई थी? नहीं. Okay, wait. Let Mrunal answer first. Mrunal, I'm asking you. Any example of a medicine that you can get from microorganism? Yes? Tell something. Anyone? Prachi, what do you have to say? Penicillin. Prachi, any other answer? Okay, Anandita said penicillin. So it belongs to which group of compounds? Yes. Have you heard about antibiotics? Okay, so penicillin is an antibiotic that is used against for treatment of various diseases. So वो medicine category में आएगा. ठीक है? So that means we have used the knowledge of microorganisms and we have produced many such products that are used for us as food
as well as for medicines. Mainly human increasing population के लिए इनका ही सबसे ज्यादा डिमांड है. Okay, the demand for all this is ever rising. ठीक है. Similarly, when you say industrial microbiology, that means here you are using the microorganisms on a commercial scale for producing various economic, social and environment related process and products. That means हम लोग microorganisms को use कर रहे हैं for the benefit of the environment also. Pollution control में microorganisms use होते हैं. Bioremediation करके नाम था. Okay, in 9th standard textbook if you see, there are examples given for that. Okay, so ऐसे अलग अलग process and products के लिए भी microorganisms use करते हैं. All of you must be aware about wine. Correct? Wine किससे बनते हैं? Yeast. Yeast, yes. Right? So wine is prepared using yeast, but the source is grape juice या fruit juice. ठीक है. तो ऐसे अलग अलग प्रोसेसेस से वी आर गेटिंग लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आल्सो. ठीक है. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आएगा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. ओके, इसमें क्या क्या आएगा कि वेरियस प्रोडक्शंस विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, मोस्ट ऑफ देम दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन. उनका एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है. So because they undergo anaerobic respiration, the process is called as fermentation. And you have studied that in life process 1. कि fermentation अगर होता है तो either of the products are produced, either lactic acid or ethyl alcohol. They are the products of fermentation. तो उस वजह से fermentation होने के वजह से you get products like bread, cheese, wine, and all the raw materials for different nutrients, medicines and enzymes. Okay, I hope you know what are enzymes. Enzymes क्या होते हैं? What are enzymes? I don't think it's a new word for you. When you say the word enzyme, yes, Pranav, your answer is correct. May I? Yeah, please. Enzymes are biocatalysts. Enzymes are biocatalysts. हाँ, बोलो. Control the life process which are carried out in our Right. body. Okay, correct. Good. See, when you say enzyme, it has come from two words, en and zyma. En का मतलब है inside. Okay, and zyme या zyma का मतलब है east. तो एनजाइमा ऐसे नाम है कि जब सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, इट वाज फाउंड इनसाइड ईस्ट, बट लेटर ऑन वी केम टू नो दैट एंजाइम्स आर फाउंड इन एवरी लिविंग सेल. So when it was discovered first time, तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स मिला ईस्ट में से which was able to catalyze many reactions. Now we know that all enzymes are biocatalysts. They influence the rate of all the different types of metabolic reactions. इसलिए enzymes are very useful. तो बहुत सारे ऐसे enzymes हैं जिनको हम बोलते हैं endo enzymes, which are produced only inside living cells. So they are produced by various microorganisms. तो हम लोग क्या करते हैं, microorganisms को we can do something called culturing. Culturing of microorganism का मतलब है कि laboratory में petri dish में giving proper nutrients and all the conditions, we can grow the microbes in as many numbers as we want. And when you grow the microorganisms, they start producing these products. And from that medium, we can obtain those products. चाहे वो enzyme हो या hormones या any other product. Okay, so that is how we are culturing and we are obtaining the desired products from the microorganisms. Is it clear? Okay. Similarly, ये तो हो गया products के लिए. दूसरा हो गया use of microbes for garbage management and pollution control. कि microorganisms को use कर सकते हैं जो biodegradable products हैं garbage में, waste में, उसको decompose कर सके.
So that much amount of waste does not go into the environment. In the nature, in the ecosystem also, you are aware about decomposers. तो decomposer जो है वो भी microorganisms हैं. They bring about decomposition of the complex organic matter, break it down and release all the nutrients back into the soil, जिस वजह से पूरा इकोसिस्टम फिर से सपोर्ट होता है. तो यहाँ पर भी हमें वही करना है. So that's how you can understand कि microbiology जो हम बोलते हैं it is actually a subject. माइक्रोबायोलॉजी अगर हाँ तुम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म पसंद रहेगा तो यू कैन एक्चुअली स्टडी दिस सब्जेक्ट इन द हायर क्लास. यू कैन बिकम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट. हर जगह पे इनका डिमांड है. इफ यू गो टू द डेयरी इंडस्ट्री, पोल्ट्री इंडस्ट्री, ओके, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, सो मेनी डिफरेंट फील्ड्स आर देयर वेयर यू कैन गिव योर एक्सपर्टीज व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, बिकॉज एग्रीकल्चरल फील्ड में देखो कितने सारे फार्मर्स है जो प्लांट्स के डिसीजेस के वजह से परेशान है. देयर क्रॉप्स आर अफेक्टेड बाय सो मेनी डिसीजेस. सो whom they will approach? Only a plant pathologist. ओके, प्लांट जानवरों के डॉक्टर को वेटरनरियन बोलते हैं, तो प्लांट्स के डॉक्टर को बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजिस्ट. ओके, सो दैट यू कैन बिकम ओनली व्हेन यू बिकम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट. तो उसके कुछ अभी एग्जांपल्स प्रोडक्ट्स वाइज वन बाय वन वी विल सी. ठीक है, तो जैसे प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आएगा डेयरी प्रोडक्ट्स. इंडिया में सबसे बड़ा डेयरी इंडस्ट्री कौन से कंपनी का है? टीवी में ऐड देखता रहेगा. अमूल. It is Amul, yes. What is the full form of Amul? I think I told this na last time. 9th standard में. Anand Milk Union Limited. अरे वाह, very good. Amul stands for Anand Milk Union Limited. Okay, मृणाल ने आंसर दिया ना? Yes, good. So here, what is this Anand? Okay, I know you are in Ace Academy, but यहाँ पे आनंद कोई और है. Who is this Anand? Yes. जिसने स्टार्ट किया होगा ब्रांड. Sure. Any other answer? दीक्षा, गार्गी चुप हो गई. फाउंडर ऑफ कंपनी. फाउंडर ऑफ द कंपनी, वही स्नेहा ने भी वही बोला जिसने स्टार्ट किया होगा. प्राची, एनीथिंग टू से? क्या प्राची मुंह में दही जमा के बैठ गई? टेल समथिंग. वी आर टॉकिंग अबाउट डेयरी प्रोडक्ट्स, बोल सकती है. ओके, आई गॉट 2 आंसर्स. एक ने बोला कि कंपनी का फाउंडर होगा, दूसरे ने स्टार्ट किया होगा. लेट मी टेल यू, आनंद इज नॉट द नेम ऑफ अ पर्सन. आनंद इज द नेम ऑफ अ प्लेस. गुजरात में बड़ौदा अहमदाबाद के बीच में एक जगह है, एक छोटा सा टाउन है, उस टाउन का नाम है आनंद. इफ यू गो टू गुजरात, देयर आर मेनी प्लेसेस which are directly the name of a person. आनंद है, सचिन है, सागर है. सागर मध्य प्रदेश में, बट देयर आर प्लेसेस. अतुल है गुजरात में. So this Anand is one of them. It is the name of a place in Gujarat. Okay, so उस जगह पर अमूल का सबसे बड़ा ओरिजिनल फैक्ट्री. It is about 2 hours from Baroda. So there it is the biggest factory. It was established by Dr. Varghese Kurian. Have you heard about him? Dr. Yes. Varghese Kurian का नाम सुना है? What is he famous for? White Revolution. Yes, he is the father of White Revolution. Okay, and because he established this company Amul for the first time, तो बहुत सारे डेयरी ओनर्स को बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले. It uplifted the economical condition of these people. Okay, and it ensured that a good quality dairy product reached every household in India. आज भी हम लोग देखते हैं अमूल के कितने प्रोडक्ट्स हैं. Correct, they produce something, I think more than 300 different products of all different types. Ice cream, cheese, paneer, butter, दूध वगैरह सब कुछ. Okay, so here ultimately, like I have visited this factory आनंद में, तो वहां पे ऐसा है ना कि it's such a huge factory.
इफ एट ऑल यू आर एबल टू गो सम टाइम ना विद फैमिली और सम टाइम, तो कभी जाओ, विजिट करो, एनीबडी इज अलाउड। ओके, बस थोड़ा सा वेट वगैरह करना पड़ता है, बट 2-3 आवर्स का अंदर टूर दिखाते हैं पूरा, सब पूरा, ऑल द लैब्स दे शो हाउ द बटर इज प्रिपेयर्ड एंड ऑल, तो अच्छा लगता है देखने को। ओके, तो मिल्क इज द ओरिजिनल मटेरियल। ओके, वॉट एवर दे वॉन्ट, देयर मिल्क इज द ओरिजिनल मटेरियल, उसमें से बाकी सब कुछ बनते हैं। तो फॉर दैट देयर इज फर्मेंटेशन दैट इज डन। ओके, तो दूध में से चीज बनेगा, बटर है, क्रीम है, ओके, योगर्ट, केफिर, लाइक सो मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर देयर। So it's only depending upon the water content. Even if you don't go to this Amul company, अपने local dairy में भी अगर देखेंगे, there are so many good dairy shops in the market. They produce their own curd, yogurt, butter and all. बहुत बढ़िया मक्खन वगैरह बनाते हैं। So it is all based on fermentation. If you go to the rural areas, okay, तबेले में जाकर देखो कितना अच्छा दूध का दही वगैरह बनाते हैं, especially लस्सी and all is famous in Punjab. Correct. So water content, acidity of the milk will change because of the fermentation, and the flavor is improved because ultimately it's not just the quality, we also need some good taste. ये जो white revolution मैंने discuss किया था, it was like operation flood करके शुरू किया था पहले। Operation flood मतलब it was a mission that every household in India should get good quality milk because one of the basic necessities है। आज भी इंडिया में हर घर में देखा गया सुबह का शुरुआत दूध उबालने से ही होते। So milk is a very, very important component, right? And all the other products are also useful for us. Butter हम जानते हैं कहाँ use करते हैं, cheese, correct? Though they are very, they have good amount of fats in it, but it is useful for us. Like you can imagine पाव भाजी, है ना, गर्मा गर्म पाव तवे पे डालते हैं, गोल्डन कलर का पाव हो जाते हैं, correct? प्राची relax, right? Yes. So during formation of these products, it also adds taste. ठीक है, तो ये जो चीज बनता है, ये देखो यहाँ पे क्या दिया, फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स बैक्टीरिया इन द मिल्क इटसेल्फ आर यूज्ड, मतलब अलग से कोई कल्चर बैक्टीरिया डालते नहीं है। मिल्क कंटेन्स व्हिच बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। तो वो सेम लैक्टोबैसिलस ही यहाँ पर यूज करते हैं। वी डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा बिकॉज एट द इंडस्ट्रियल लेवल वी आर टॉकिंग। At home when you prepare curd from milk, then you have to add some culture. तो हम लोग दूध में थोड़ा सा आधा चम्मच दही डाल देते हैं। Okay, so that dahi that we put half a spoon or something, that is the culture we are putting. And adding a culture to the original material is called inoculation. तो यहाँ पे जो हम करते हैं उसको inoculation बोलते हैं। तो घर पे कभी ऐसा करते हुए देखेंगे या खुद करते रहेंगे तो रिवाइज दिस वर्ड inoculation. Tell your mom कि I am inoculating the milk with the curd by adding lactobacillus. ऐसे डेली लाइफ में रिवाइज करने का ये सब चीज, करेक्ट? यस, साइंस इज एवरीवेयर अराउंड यू, राइट? यस, तो यहाँ पे बैक्टीरिया इन द मिल्क इटसेल्फ इज यूज्ड ओनली फॉर चीज प्रोडक्शन। देयर आर स्पेशल फंजाई आल्सो व्हिच आर रिक्वायर्ड, एंड चीज के भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। सो मेनी डिफरेंट टाइप्स आर देयर, करेक्ट? इफ यू गो टू वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका जैसे अगर कंट्री में जाता है तो वहां तो पूरा ब्रेड एंड चीज प्रोडक्ट्स ही है, करेक्ट? इफ यू गो टू द यूरोपियन कंट्रीज लाइक इटली, तो वहां पे मेयोनीज है ना? तो ऑल दीज आर प्रोडक्ट्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, फर्मेंटेशन के ही प्रोडक्ट्स है, ठीक है? एंड देन अदर देन लैक्टोबैसिलाई, मिल्क कंटेन्स अ शुगर. Which sugar is present in milk? लैक्टोज। Very good. It is a lactose sugar. So lactobacillus, what does it do? Ferments the lactose sugar itself, and anaerobic respiration की वजह से बनता है lactic acid. This mechanism you have to remember. And जो भी milk proteins हैं उसका होता है coagulation. Okay, so जैसे diacetyl करके compound है, sometimes this is produced as an intermediate. So this has the flavor of butter. घर में कभी घी या मक्खन बनाया है ना? तो दैट टाइम यू कैन सी कि
अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं. इवन मार्केट में भी देखो बटर के अलग अलग प्रोडक्ट्स, द फ्लेवर्स आर स्लाइटली डिफरेंट. Curd also, if you buy from one dairy shop, you buy from another dairy shop, you buy, you will get the difference. So this all because of the acidity content and the water content. Okay, so next आता है yogurt products. Okay, and this is the word I said, inoculant. Inoculation जो मैंने बताया. Okay, adding a small bit of a culture, okay, to increase the products, that is called inoculation. And nowadays in the market you also get condensed milk powder. अमूल का वो भी एक प्रोडक्ट है, देखा रहेगा, राइट? डेयरी व्हाइटनर या मिल्क पाउडर करके बोलते हैं. ओके, सो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंडेंस्ड मिल्क. दे आर डिहाइड्रेटेड एंड मेड इनटू अ पाउडर. तो वो कहाँ यूज करते हैं मिल्क पाउडर? वेयर इज इट यूज्ड? Like in those places where normal, To make tea and coffee. yes, at home level we use for that, but अपने अपने रेगुलर यहाँ इस सिचुएशन में हम लोग घर में तो नॉर्मल दूध ही उबालते हैं. But there are places where regular milk is not available, like you say the military people, उनको नहीं मिलता फ्रेश दूध, तो they prefer milk powder. Okay, so that is another added advantage कि milk powder जैसा product हम बना पाए, तो फायदा ये हो गया कि like if milk is not available, okay, or if it is not they're not having the facility to boil milk or heat milk, या रेगुलर नॉर्मल लिक्विड मिल्क लो तो उसका स्टोरेज का पेरिशेबल लाइफ टाइम रहता है, बट मिल्क पाउडर कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम. ये सब एडवांटेज हो गया उस वजह से. तो न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल बट इन अ बेटर फॉर्म. ठीक है, सो सच अ मिल्क इज टेकन, इट इज बॉइल्ड, and once it is cooled to a normal room temperature, there are bacterial strains added. You have to remember the names of these bacteria: Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii. Okay, that's what I said in the beginning कि बहुत सारे microorganisms के नाम आएंगे. Please remember, don't invent any new microorganism and don't create any hybrid microorganisms also. Okay, ये दोनों याद रखना है. And these two are added in 1:1 proportion. Okay, and lactic acid जो बन जाता है इनके fermentation की वजह से, that gives a gel-like consistency. उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं योगर्ट. Got it? तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ इज योगर्ट प्रिपेयर्ड? तो दिस शुड बी योर आंसर. ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम आने चाहिए. ठीक है, अंडरस्टूड द रेसिपी फॉर योगर्ट. ओके, बाय द वे टाइम जरा कम हो रहा है, तो लेट अस डिस्कनेक्ट एंड जॉइन बैक अगेन. ठीक है.